students, welcome in our mapping class. Today I am going to introduce some of the various multi-purpose river project. So in this class I am going to introduce the location of the various multi-purpose river project in India. Let's start with the Damodar Valley project. Students, the Damodar Valley project is one of the major independent India's project. It is a joint venture of Jharkhand and West Bengal. Jharkhand and West Bengal. Here, this is the river Damodar. The Damodar Valley River project established over the Damodar River. This river is known as Sorrow of Bengal. Why? Due to the over excessive water in the rainy season, and it create flooding over and over. So that's why this river is known as Sorrow of Bengal. Student, this project initiated or started in the year 1948 on the river Damodar. So this river was known for its root diversion, erosion and flood. So Bengal government and Indian government make a project over this river to control the flooding. This is 493 kilometer flowing river in Bihar and 240 kilometer in West Bengal and Jharkhand. And after completing the flow, it merged with Hooghly river in Bengal. So students, nearly approximately 18,000 square kilometer of area is affected by the flood and erosion caused by this river. So government is decided to build up a river valley project just like Tennessee Valley Corporation. जिस तरीके से अमेरिका में टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सिमिलरली उसी से अफेक्ट होकर के, उसी से इन्फ्लुएंस होकर के हमारे इंडिया में भी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने दामोदर वैली प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया. राइट, अ डैम इज बिल्ट अप over this. Hope you guys see the location of दामोदर वैली. यहाँ आपको याद रखना है कि दामोदर वैली जो है ये जॉइंट फ्लो है बंगाल और झारखंड में, ये फ्लो होती है और लास्ट में मिलती है हुगली रिवर में. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हीराकुंड. सो हीराकुंड इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया. This project established by the Indian government on the river Mahanadi. See the location of river Mahanadi. This is the river Mahanadi. Here, right? This is the mouth of Mahanadi. So Hirakud river project developed upon the river Mahanadi. This river is also known as Sorrow of Odisha. इस रिवर को भी उड़ीसा का दुख कहा जाता है. क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ फ्लडिंग. सो द रिवर महानदी ओरिजिनेट इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इट कॉजेज फ्लड्स इन द रिवर वैली एरिया especially during the monsoon period. So that's why this river also said to be Sorrow of Odisha. The government of India has built the Hirakud Dam 14 kilometers upstream Sambalpur with a cost of rupees 68 crore, and it is the longest dam with a length of 4,801. आपको याद रखना है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट सबसे लंबा प्रोजेक्ट है और इसकी टोटल एरिया कवरेज है 4,801 मीटर. ऑल राइट, and it's having a water storage of 810 crore cubic meters. This project has been completed in 2 phases. In first phase, Hirakud Dam with the construction of Boragad Canal at right side and the Session and Sambalpur Canal system in the left side with 4 power plants. अब किसी भी रिवर वैली प्रोजेक्ट का एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ फ्लड कंट्रोल ही नहीं होता, बल्कि पावर प्लांट भी डेवलप हो जाते हैं या फिर अदर भी
अदर पर्पजेज को भी फुलफिल कर लिया जाता है. अदर पर्पजेज लाइक फिशिंग, राइट, और इरिगेशन, लाइक दैट. Now come to the Chambal Valley project. This is the river Chambal. See, right? So the Chambal Valley project is a joint venture of Rajasthan, Madhya Pradesh, and it started in the year 1953. Joint venture है ये दो स्टेट्स का, एमपी और राजस्थान का, और इसका एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ था 1953 में. कहाँ? ओवर द रिवर चंबल. सो इट वॉज स्टार्टेड इन 3 phases. ये रिवर चंबल पर जो प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया गया है 3 phases में पूरा किया गया है. फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड फ्लड विच इज कॉज्ड बाय द रिवर चंबल. इन द फर्स्ट phase, on this project, Gandhi Sagar Dam established in the Mandsaur district of MP and canal system were built. Whereas in the second phase, Rana Pratap Sagar Dam is dam at Rawat Bhata in Chittorgarh district, and in the third phase, Jawahar Sagar Pickup Dam on the border of Kota, Bundi and other districts were built. So this entire Chambal Valley River project is completed in 3 phases by the making of 3 different project areas, right? It has been taken by the taken out water from the MP region. Here, see, Chambal Valley project MP से स्टार्ट होकर के और फिर राजस्थान के एरिया में होता हुआ इस तरीके से. और फिर हम जानते हैं दैट चंबल रिवर इज जॉइंड लेटर द रिवर यमुना. इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना. तो इस तरीके से इस पूरे एंटायर रिवर सिस्टम को 3 phases में डिस्ट्रीब्यूट किया है. नाउ लेट्स मूव टू द अदर वाटर मैनेजमेंट एंड लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान कैनल, द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट. Students, the Indira Gandhi Canal project or the Rajasthan Canal is established over the Harike barrage in Punjab, and the Harike barrage is situated on the confluence of 2 rivers Ravi and Satluj. वहाँ से इसको water मिलता है, and then what happened? Then this water from here, the Indira Gandhi Canal project starts.